First, n to the power 11 minus 1 is divisible by, without formula, I said, right? Without formula. Now, formula is always there, right? And that's very easy to solve that. And जब वो सीखेंगे तो उससे आराम से we will solve from that, right? So this I said कि without formula we have to prove that this is divisible by 11, right? So how many of you have done without comma? So one, this is very good. And okay, Aryan, switch on your camera, Aryan. सर मेरा कैमरा ऑन है, बस 1 मिनट सेट कर रहा हूँ, गिर गया। सर हम लोग का स्कोर्स आ गया होगा, क्योंकि वो पर्पल कॉमेट के वेबसाइट में दिखा है कि अप्रैल 12 को स्कोर्स आएंगे और 13 है आज। तो मैं भी पढ़ रहा हूँ जो तू पढ़ रहा है। जो कृषि ने भेजा वो मैं भी पढ़ रहा हूँ। सर 15th को रैंकिंग्स आ जाएंगे। हाँ, नो वरी, एग्जाम देना अपना काम है। बिलीव इन प्रोसेस, ना बिलीव इन प्रोसेस, नहीं लॉन्ग वे टू गो, राइट? रिजल्ट हमारे दिमाग में जैसे बैठेगा वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। बिलीव इन प्रोसेस, राइट? वी हैव टू गो फॉर दैट। धीरे रिजल्ट्स तो अपने आप वो एक्यूमुलेट हो ही जाते हैं। तो नो वरी, डेट देते हैं, देखते हैं, राइट? फर्स्ट वन, सो n to the power 11 minus 1 divisible by 11. So who is going to solve this? Right, divisible by 11. May I? First, when I'll factorize this, I'm getting n to the power 10 minus 1, right? Or this will be n minus 1, then n plus 1 power 5, right? And the rest of the numbers are, right, what you are getting, n to the power 10 minus 1, so n minus 1. So this 1 is n square minus 1 is common out, right? Then n to the power 8 plus n to the power 6 plus n to the power 4 plus n square plus 1. Is this okay? Is this step is okay, everyone? Right? Now, if I'm dividing this by obviously 11, the remainder will be from 1 to 10, right?
तो ये 3 फैक्टर अगर n से डिविजिबल होंगे, राइट, if these 3 factors are divisible by 11, so we know that या तो n से ही डिविजिबल, मतलब 11 के मल्टीपल में होगा, राइट, नंबर इज डिविजिबल बाय 11, राइट, और नंबर के रिमाइंडर्स हैं वो मेरे पास, राइट, 3 नंबर कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, राइट, तो 3 कंसेक्यूटिव नंबर है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो नंबर मेरे पास आएंगे 11k प्लस r का जो फॉर्म होगा, इसमें r की वैल्यू जो है, राइट, या तो 2 होगी या 9 होगी, बोल सकता हूँ, मतलब 11k प्लस माइनस 2 के लिए ये ट्रू है। ओके, ये स्टेप क्लियर है सभी को? और 11k प्लस माइनस 2 वाले नंबर्स मेरे पास हैं, राइट, उसके आगे के ही नंबर जो भी होंगे हमारे पास, नहीं तो 11, लाइक जितने भी नंबर्स है वहां तो ऑलवेज डिविजिबल होगा, 11k प्लस 1, 11k माइनस 1, ये तो सीधा सीधा मेरे को फर्स्ट 3 से ही नजर आ रहा है, राइट। सो अगर मैं 11k प्लस 2 का नंबर ले रहा हूं, सो आई नो दैट n स्क्वायर विल बी ऑलवेज एंडेड विथ 4, और n टू द पावर 4 का क्या होगा बता दो, राइट, 5। n टू द पावर 6 के लिए क्या होगा, -1 बोल सकता हूं। n टू द पावर 6 क्या आ जाएगा, 2 टू पावर 64, नहीं, -1 नहीं होगा, दिस विल बी, ये समझ में आ रहा है, 11k प्लस माइनस 2 मैंने रखा तो 2 टू द पावर 6 चला गया, राइट, 2 टू पावर 6 इज 64, राइट, सो ये नंबर मेरे पास आएगा 9, और n टू द पावर 8 क्या देगा, राइट, n टू द पावर 8, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन दे रहा होगा 3। ओके, पहले इससे थोड़ा सा देख लो, कहीं कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। तो एक्सपांड कैसे हुआ? मैं ये किया, देखो फिर से एक बार देख लो ध्यान से, ना बहुत सिंपल सा बात कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूँ 11k प्लस और -2, राइट, ये दोनों ही केस जो मेरे पास आ रहे हैं, इसमें मेरे पास जो नंबर है 1, n स्क्वायर, n टू द पावर 4, n टू द पावर 6, n टू द पावर 8, एक एक करके उस पर काम कर रहा हूँ। मैंने कहा कि अगर ये n है, राइट, तो n स्क्वायर जो होगा दैट विल एंडेड विथ 4, n टू द पावर 4 जो होगा, राइट, n टू द पावर 4 होगा, दैट इज, सभी नंबर 11 के मल्टीपल होंगे, द लास्ट नंबर विल बी 2 टू द पावर 4, दैट इज 16, वो 5 होगा। नाउ व्हाट आई एम सेइंग कि n टू द पावर 6 जो हमारे पास है, तो वो आना चाहिए मेरे पास 11k प्लस 4 इंटू 11k प्लस 5 के फॉर्म में। सो मैं उसे डायरेक्टली वहां पर कर, यू कैन सी कि सब तो 11 के मल्टीपल है, ओनली द लास्ट टर्म इज व्हाट 20, और सब तो 11 के फैक्टर ही रहेंगे, 11 का मल्टीपल रहेगा, एंड इसे मैं डिवाइड करूंगा तो आई एम गेटिंग 9, एंड n टू द पावर 8 के लिए व्हाट आई एम सेइंग कि ये n टू द पावर 6 वाली जो टर्म है, और उसे n स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दी, राइट, तो यस। राइट, एंड इसके साथ में एक 1 भी था जिसको 1 रहने दिया, ये सब का एडिशन अगर मेरे पास, अगर इन सब का एडिशन जो है मेरे पास,
राइट। अगर ये सब का एडिशन मेरे पास मिला जुला के 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, राइट, 11 का मल्टीपल आ जाए, तो मैं बोलूंगा मेरा काम बन गया। देखो तो आ रहा है क्या, यस सर। राइट। तो 13 और ये दोनों ही क्वेश्चन जो मेरे पास थे ना, उसके लिए जो वर्किंग था वो कुछ ऐसा हो सकता था। ओके, राइट। बट ये क्वेश्चन एक मैंने केवल इसके लिए दिया था कि यू मस्ट नो कि फैक्टर हम कैसे बनाते, राइट, राइट। इसके बाद एक क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 30, क्या था, m⁵ प्लस 3m² n m to the The power m to the power 4n. m⁴n minus 5 m³ n² minus 15 m² n² plus 4 n to the power, Sir, m square n cube 15 whenever. अरे क्या हो रहा है मेरे को, पावर 2 to 3 ये जाएगा, फिर यहाँ पर होगा n³ n to the power 4 ये जाना चाहिए, और 12 n to the power 5 जाना चाहिए, आई गेस। तो कैसा, यही दिया हुआ है ना। हाँ sir. उफ, लंबा चौड़ा है नहीं, मुझे चाहिए कि ये हमारे पास नंबर कुछ ऐसा आ रहा है जिसमें we want कि cannot have a value 33 regardless of what integer are substituted for m and n, right। मतलब साफ है कि मेरे को ये पहले एक बार जल्दी से सब लोग देख लो क्वेश्चन, फिर मैं शुरू करता हूँ। एक इस तरह का क्वेश्चन कुछ दिखाया था मैंने, थोड़ा अलग था, वो फैक्टर्स के साथ में हमने किया था। 5 के पावर्स में है। सबसे पहली बात जो दिख रहा है, नंबर बड़े प्यारे दिख रहे हैं, यहाँ पर नंबर बड़े अच्छे से दिख रहे हैं, राइट। तो अगर मैं कुछ चीजें यहाँ ऑब्जर्वेशन में लाऊं, m⁵ 3m⁴n 5 m³ n² minus 15 m² n³ plus 4 m⁴ plus 12 n⁵ सर इस सारे अगर दो फैक्टर लेंगे तो इधर m टू द पावर 4 कॉमन लेंगे, m+3n बनेगा, फिर उसमें के बाद 5m² n² को कॉमन लेंगे उधर तो m+3n बनेगा, फिर सारे का m+3n एक कॉमन आके फिर हम लोग इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ से एक ये चीज तो दिख रहा है कि m+3n यहाँ से भी, यहाँ से भी, और यहाँ से भी, पहले तो वही कॉमन ले लेता हूँ, चलो। तो m+3n कॉमन आउट, तो व्हाट आई एम गेटिंग, m+3n, तो दिस इज m⁴ minus 5, राइट, m², इसमें m⁴ लिया, इसमें m²n कॉमन लिया मैंने, प्लस 4, यहां से कॉमन आ गया mn³, राइट। ये भी फैक्टर आ रहा है, इसके भी फैक्टर दिख रहे हैं ना, वो भी फैक्टर कर लेते हैं। m+3n इंटू ये आ जाएगा m² माइनस, राइट, एक यहाँ पर 4 ही पावर कर दिया, दिस 4 पावर माइनस m²n माइनस 4
m square n plus 4mn square mn क्यूब, तो m plus 3n एंड ये भी m माइनस एन एक कॉमन आ रहा है, एक m प्लस m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर कॉमन, राइट। सो m स्क्वायर माइनस 5n प्लस 6, तो m प्लस 2n और m प्लस 3n, ऐसा कुछ फैक्टर देंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 5, ये 5 फैक्टर बन गए। चलो ये क्वेश्चन मेरे पास ये है, थोड़ा सा आप सोचने के लिए आसान पड़ेगा मेरे को, नहीं। एंड मेरे को क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि ये जो हमारे पास नंबर है, जो भी मेरे पास नंबर आ रहा है, कैन नॉट हैव वैल्यू 33। ये वाली वैल्यू जो है ये 33 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब ये प्रूफ करना तो बड़ा मुश्किल काम होता है कि कैन नॉट हैव वैल्यू। तो मेरे पास तो एक ही तरीका होता है कि इसे एज्यूम ही कर लेता हूँ ये 33 है। नहीं, ये प्रूफ करना कि कोई नंबर नहीं है ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो सबसे अच्छा तो मेरे लिए यही कि मैं एज्यूम कर लेता हूँ लेट यू आर द वैल्यू 33, आप 33 हो, ये मैंने मान लिया। अब 33 5 नंबर के फैक्टर चाहिए मेरे को, सर राइट। उसमें सिर्फ 4 ही आ सकते सर हैं। एंड दैट वुड ओनली बी पॉसिबल अगर 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 11 होगा, उसके बाद और हो इन नहीं पाएगा। कोई भी दो नंबर सेम नहीं है, सही है, ये भी कंफर्म। इनमें से कोई भी दो नंबर सेम नहीं है, सब डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट बोलने का एक तरीका बड़ा अच्छा सा होता है। यहाँ पर डिस्टिंक्ट बोल मतलब बोला नहीं उसने, ऐसे फैक्टर में लाके छोड़ दिया कि ये सब नंबर डिस्टिंक्ट है। एंड वेरी गुड, मेरे ख्याल से करीब करीब आप लोग सब बात पकड़ ही चुके हो। अब ये 33 में एक नंबर 3 है, एक नंबर 11 है। मैं कितना भी कोशिश करूंगा तो एक नंबर -1 होगा, एक नंबर दूसरा -1 ही, या फिर एक माइनस के साथ ये माइनस भी कर दिया। 1 2 3 4, 4 नंबर के बाद जो नंबर मेरे को लेना पड़ेगा, कितना भी मैं कोशिश कर लूं, मेरे को वो नंबर या तो 1 या -1 लेना पड़ेगा। ये 4 डिस्टिंक्ट नंबर तो मैंने ये 4 लिख डाले, राइट, और इसका प्रोडक्ट भी 33 हो गया। अब मेरे को अगर फोर्थ नंबर लाना है, राइट, अगर फिफ्थ नंबर लाना है तो मेरे पास या तो उसको 1 लिखना पड़ेगा या कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं। अगर 1 लिखा तो ये दोनों नंबर सेम हो गया, मतलब इस नंबर 33 के 5 डिस्टिंक्ट फैक्टर तो हो ही नहीं सकते, मतलब ये लिखा हुआ कभी भी 33 नहीं आ सकता। आई होप आई एम क्लियर ऑन दैट, ये समझ में आई। इज दिस ओके? अब हाँ, एक ब्यूटीफुल क्वेश्चन कि ये सर फैक्टराइज तो यहाँ नजर आके दिख गई। अगर ये मेरे को दिखाई नहीं देता कि ये फैक्टराइज हो रहा है तब कैसे करें? अगर ये फैक्टराइज नहीं हो रहा है या समथिंग वी हैव टू सी, कि तब भी इसको फैक्टराइज हम लोग को करनी है, राइट। से एक तो ये तरीका था जो हमारे को दिख रहा है वहां पर, लेकिन थोड़ा सा इस पर बात कर लेना बनता है, क्योंकि आपको यहाँ पर ये चीज कभी क्वेश्चंस में एंजाइटी देता है और देगा। तो व्हाट आई एम सेइंग कि दिस इज गिवन, राइट, दिस इज गिवन, और इसके फैक्टराइजेशन की बात कर रहा हूं। मैंने कहा कि ओके लेट्स सी, मैं यहां से क्या करता हूं कि n⁵ कॉमन ले लेता हूं और m/n को एक नया नाम दे देता हूं t। ये मेरे पास है t⁵ प्लस 3 t⁴ -5 t स्क्वायर -15t प्लस 4 प्लस 4t प्लस 12, 15⁵ 3 t क्यूब है ये, t स्क्वायर प्लस 40, ये। इज दिस ओके? इज दिस ओके? अब दूसरा काम मेरे पास जो है यहाँ पर केवल ये देखना, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज मेरे पास फंसी हुई है, राइट, वो वैल्यूज जो मेरे पास है, राइट, जो इवन पावर के साथ है, जो ऑड पावर के साथ है, कि अगर मैं -1 रख रहा हूँ समथिंग, तो 538, राइट, ये 12 के साथ में ये पूरा नंबर, क्या नंबर ऐसा होगा जिसके लिए ये मेरे पास हमेशा सेटिस्फाई कर जाए? क्या ये 1 के लिए ट्रू है? 1 के लिए ट्रू है, ध्यान दो।
अगर मैं t इज इक्वल टू 1 रखूं, क्या ये ट्रू है? 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 3 19 प्लस 120 बन रहा है, और ये देखो ये भी 20 बन रहा है। तो मतलब t इज इक्वल टू 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस, राइट। एज वेल एज अगर आप ध्यान से देखो तो t इज इक्वल टू -1 भी साथ ही साथ फैक्टर बन रहा है। -1 प्लस 3 प्लस 5 -15 -4 प्लस 12। मतलब मेरे को दो फैक्टर तो t इज इक्वल टू +-1 ये दिखी गए, एंड इसके आगे की कहानी आप जानते हो कि आप अगर इसे t² -1 से डिवाइड करने पर क्यूबिक इक्वेशन का आ रहा है, उसको सॉल्व करना हमेशा आपके लिए वर्केबल होगा। आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। तो दो चीजें हमारे पास यहाँ से आई, जो राइट पहले भी हम लोगों ने इस तरह के क्वेश्चन किए हैं, लेकिन इसको देने का तरीका इसमें बहुत ही प्यारा था कि वही हमारे यूनिक फैक्टर्स हैं, लेकिन रियली आपको एक चैलेंज किया गया, राइट। सेकंड, नोट कर ली इसे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नंबर कौन सा दिया था मैंने? एक 30 35 35 हो गया सबका? क्वेश्चन 35 इज ओके एवरीवन? 44 एंड 46, 44 का मैं सी जो था उसके लिए मैंने दिया था, मतलब फैक्ट बता। 44 में जो सी था ना, 14 टू द पावर 14 टू द पावर 14, मैंने लाइक लास्ट टू डिजिट ऑफ दैट नंबर उसके लिए मैंने दिया था। एंड ऑब्वियसली 46 तो मतलब फेवरेट क्वेश्चन में एक है। सर हम 44C मेरा निकला। निकला क्या है आंसर बेटा? 36। 36, वेरी गुड। और सबके आंसर क्या क्या रहे? तो मेरा 12 आया। 12 आया, और किसी का 44 का सी? कोई नहीं, साथ में डिस्कस कर लेते हैं, राइट। और किसी का आंसर? मैं 2 से 3 मतलब मैक्सिमम 4 मिनट आप लोगों को दूंगा, जल्दी से एक बार अटेम्प्ट कर लें जिससे मैं डिस्कस कर पाऊँ। 44 का सी? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। स्टार्ट करें क्या? जल्दी देख लो। उत्कर्ष नहीं किया क्या? सर किया है 36 है। सर 36 है। 36 आ रहा है। संजना, डन दिस?
Okay. Okay, let's start. आप लोग आइडिया दो पहले, प्लस कैसे किया बेटा? तो मॉड 100 यूज किया था। ऑब्वियसली, वेरी गुड। तो रिपीटेशन देखा, रिपीटेशन देख के आपने किए। ओके, आर्यन। Yes, sir. अब What, sir? this question बेटा, what is your answer? 36, 36. How you got that? Sir, I got it. First of all, I did 14 squared to like make things easier. 14 squared comes 196. So 196 to the power 14 to the power 14 by 2. Then I took 196 as 200 minus 4 because 200 last digits is 0. So we can just ignore 200 and just write minus 4 to the power 14 to the power 14. Minus Sorry, 2 to the power 7 not to the power, हाँ. yeah, 14 to the power 14 by 2 or 14 to the power 14 by 2 can also be written as minus 7 into 14 to the power 13. Then I took out the pattern for 4, which is 4, 16, 64 until I got the definite pattern. Then I again gone to the power 7 into 14 to the power 13. And 14 I have again simplified it into 10 plus 4. Since 10's last digit is 0, I again ignored it. And 7 into 4 to the power 13 and applied the patterns to it and got it. Not bad. Same cursive, Yes, sir. Modular congruency, no pattern. no pattern. Same. 14 to the power this, I can rewrite this as 7 to the power 14 to the power 14 and 2 to the power 14 to the power 14. Is this okay? 7, we know that 7 is a number like 7 to the, what is 7 to the power 4? 2401. 2400 plus 1, right? So obviously we know that this will be ended with 2401. So this will be ended with 0. Is this okay? Right. So only I have to concentrate for this 2 to the power 14 to the power 14. Right. And already we have seen, ये तो last lecture में ही हमने किया था ना? This was 2 to the power 14 to the power 14. Right. So we know that 2 to the power 20 minus 1 is divisible by 25. Right. Then we have took the cases. Like 25, it's ended with 25. Now remember, when we are dividing, right, 2 to the power 14 to the power 14 is, we can write 14 is 196 and 14 is, could you write this 2 to the power 14 to the power 14 as 2 to the power 16 into 20k? And this is giving you, right, divisible by 26. Only I have to see this one, 2 to the power 16. And this is nothing but 2 to the power 10 into 2 to the power 6. Right? So this 36 is coming on this, the unit place of 10th and unit place. From this, obviously, we will get that. Right? So 36 is the answer. Okay? The next was, what was the number? 46. 46 is a beautiful question. 46. How many of you have done 46? Question number 46. Anyone? Any idea? No?
So it was given in 46, right? We have to 9 to the power 9 to the power 9 to the power 9999 1001 nines, right? Final 5 digits, right? Final 5 digits of working is 4 use, right? Final 5 digits, not 1 or 2 or 3, right? So this is 9 to the power 9 to the power 99999, right? Last 5 digits. Any working on that? Anyone can help me out? How you are going to work on that? Two to 3 minutes, everyone. Then we'll proceed. Just you have to pick from 1 digit 9 to the power 9, how it's working, then 9 to the power 10, and so on. मैं स्टार्ट करूं? एक पैटर्न होता है सिंपल क्वेश्चन, बट वो पैटर्न को लाइक वी हैव टू गो विद द पैटर्न, राइट? हाउ वी कैन गो विद द पैटर्न, एंड इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, बट ये काफी कुछ आज हम लोगों को वर्किंग दे के जाएगा, राइट? बट बिलीव मी, आफ्टर दिस क्वेश्चन, any question of power will be always simple for you. Last 2 minutes, अपने working देख लो, then I'm starting. Right? See. Okay, everyone, let's start. First, we are starting with, we have given x1 is equal to 9. Right? We are giving the power x1, x2, x3 up to, right, going on. Right? Second, I can say x2 is equal to 9 to the power x1. Right? X1 is in the power. And this 10 minus 1, 9 is nothing but 10 minus 1, x1. Right? If I'll expand this, so what I'm getting, a lot many terms are there, 10 to the power x1 minus 10c1, oh sorry, x1c1, 10
to the power x1 minus 1, and so on up to x1c n minus 1, yeah, x1c1 into 10 minus 1. Is this okay? If I'm taking x1 is equal to 9, the first number, वही first वाले number अगर है, like we are going for, x1 is equal to 9, so this will be 90 minus 1 will be 89. Is this okay? The last two digit of this number will be 89. Right? This is chit, right? This I'm going for, right? X2. X3 is 9 to the power x2. And this will be 10 minus 1 to the power x2. Right? And if I'll expand this, only I'm writing the last term because the rest of the term will always contain 10 square, right? 10 square, x2c2, and 10 cube, and so on. So all the like last two digits are always there, right? So I'm concentrating on just going on this, right? So this is plus, minus, plus, right? And the last of this will be, right, x2 c1 into 10 minus 1. And this number is nothing but this x2 to 1 is x2 only, x2 into 10 minus 1. And x2 last two digit was 89, 89 minus 1. Is this okay? Oh, so that means that it will be 889 is the last three digits of 9 to the power 9. 9 to the power 9 to the power 9, and a lot many Ah, sorry, yes. numbers we have to go. Now, That means I guess 9 to the power 9 to the power 9 to the power 9 would be 8889. And then and Then we- what about this number, right? This one, right? This ending with, right, one number before one and going to up to this, right? So if x2c2 is x2 minus 1 by 2, or this will be 8 9 and numbers are there, and this is 8 9 minus 1, this is 8 8 numbers are there upon 2, right? This is coming from this, right? This 890 minus 1, so what we are getting 600, last three digits, so we are getting 600, right, with minus sign, plus 890 minus 1. See, what is this number? 289. Are you okay up to this? We have gone to x3 only. Just now your work, you have to go for the fourth one, right? What you'll get for x4 means 9 to the power x3. Everyone, try this. x3 you have, you can write down the same, right? x3 you have, now you have to go for x4. Go for that x4, right? Last four digit of the number.
First, we have taken only 9, then 9 to the power 9, then 9 to the power 9 to the power 9, then 9 to the power 9 to the power 9 to the power 9, right? This is going for x4, means 9 to the power 9 to the power 9 to the power 9, right? So up to this, we are able to find out last three digits, right? This will give you the last 4 digits. Go for this. So this x4, right? The pattern you can see 9 to the power x3, right? So 9 to the power x3. So what I'm getting, the last term is -1. Before that is x3 c1 into 10. Before that x3 c2 10 square. Before that x3 c3 10 cube. Up to this is okay. Just you have to calculate this number, last 4 digit of that. And the Third, it would be 909. x3 is 289. 289. 1 minute. X3 is 289. Right? X3 is 289. Right? Only we have to calculate in, right? Obviously, last term is, I'll start with, this time I'll start with this. X3 C3, right? So this is 289 or be numbers, but I'm not writing. 288, the rest of the number, 287 upon 3 into 2 into 1, right? Into 1, 2, 3 zeros, right? What do you think? This will end with what number? Because 3 zeros are there, only have to concentrate for the last digit of this. Right, so this is ending with 4 into 1000 minus this is ending with 16 into 100 plus 2890 minus 1. This you are getting for x4, right? This is coming as 5289 na? Up to 4 digits, I'm there, right? Now, the fifth one, when I'm saying this is 9 to the power x4, you'll get the fifth digit. Now, it's your job to get that. Is this okay, everyone? Are you getting this?
right? One by one, we are going with the numbers, right? One by one, we are going with the numbers with the power of 9, 9, and 9. Right? So, is this okay? Right? So, it's given 1001 times, but only you have to find for 5 times. After 6 times, this will repeat itself. Right? So, only you have to go manually for 5 times in this number, so you'll get the 5th digit. Right? 5289 is the last 4 digits. Right? And this, right, I'm giving you for the 5th digit, this is your homework, right? You have to take care of this, like, what is the number coming before this? Passive, is this okay? Yes, sir. Utkarsh, Yes, sir. Sanjana, okay? Yes, sir. Tanay, Tushar, Rishabh, Yes, sir. Yes, sir. okay? So this pattern you have to go with this, right? I have given you one more question, question number 50. 50. The question was, is the number 1000 C50, sorry, C500 of combination 1000 element taken 500 at a time divisible by 7. So this is a simple one, right? Not divisible by 7. सबने ट्राई कर लिया था, मेरे को क्यों लग रहा है ऐसा कि यू हैव नॉट ट्राइड all of you. This is a simple question. All the multiple of 7 will be cancelling out in this. That's the reason you are not getting any of the number. If you'll calculate now, you can see कि all the multiple of 7 will be cancelling out from this. The highest power of 7 is same. How many powers of 7 are coming in 500? 1000 it is 164 and then 500 it is 82. So 82 into 2. To 164 and 500 divided by 82 and 82. That's the reason we are not getting any power of 7 that will left out. I hope you all know how to find 1000 by 7 greatest integer plus 1000 by 7 square greatest integer plus 1000 by 7 cube, right? We have not to go for, I guess, 7 to the power 4. Right? Question number 58. Prove that if the sum of the fractions 1 by n, 1 by n plus 1, 1 by n plus 2 is put in decimal form, it forms a non-terminating decimal of deferred periodicity. सर इसका n into n plus 1 into n plus 2 is always divisible by 3 और सारे numbers जो कि 3 से divisible है उनका एक regular periodicity होता है after this. हाँ, very good, very good. Right, क्या periodicity क्या होती है?
सर कभी कभी हम लोग का 3333 हो सकता है, नहीं तो 66 हो सकता है, 466 हो सकता है। वो डिफर करता है कौन सा मल्टीपल है, लेकिन जितना भी हम लोग का 3 का मल्टीपल्स है, अगर वो डिवाइड होता है तो हमेशा वो देता है ऐसा रिकरिंग डिजिट्स, बिकॉज n into n+1 and n+2 इज ऑलवेज डिविजिबल बाई 3, चाहे जो भी नंबर हो। फैक्टोरियल 3 से वो डिविजिबल होगा। ओके एवरीवन, नीचे का नंबर जो है दैट इज डिविजिबल बाय फैक्टोरियल 3, राइट। एंड ऊपर जो नंबर आ रहे हैं वो 3n² + 6n+, राइट। जो भी नंबर मेरे पास आएंगे थोड़ा सा ही फॉर्म आएगा ना, देख लेता हूँ। 1/n + 1/n+1 + 1/n+2, right? Then we have to take out this as n² + 3n + 1 + n² + 2n + n² + n. So this is coming तो as ये हो जाएगा 3n² + 6n+2 विच इज नेवर डिविजिबल बाई 3। very good. So remainder is coming as 1/3 or 2/3. So this will be repeating function. Okay. यही दिया था ना, और तो नहीं था कोई? That one the last one ना? So format times Which one? Number 65. 65. हाँ. Prove that any two number following sequence are relative prime. अच्छा, relative prime. $65. The numbers are 2 + 1, 2² + 1, 2⁴ + 1, 2⁸ + 1, right, 2⁴n + 1, and so on. Prove that any two number of the following sequence are relatively prime. Okay. Who is going to solve this? How we can solve this? This is the like again a simple question, but बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एंड यू नो दिस, ये कई बार टेलीस्कोपिक में भी मैंने कई बार इसको यूज किया है। दैट्स द रीजन आई हैव गिवन दिस, राइट। टेक योर टाइम, 3 minutes you have, think. This is simple question. We have used this in telescopic. This is the telescopic series, and telescopic, that formula like you can use for that proving this thing. Very good. Very good. This, I guess, 2 bars will come. I will check my mobile number. You have my mobile number? नो सर, नो सर, मतलब कि लाइक ये Huh? You मतलब ये 4 नंबर्स है जो कि ये सपोर्ट करता है। you have my mobile number. Check what the primes that will be coming from my mobile number. ओके सर। It's 5 × 9, 09319.
Let's say what this n plus 1 divides n to the power. Yes, true. divisible. Yes, true. Then So then we can substitute values to get the result. so you are saying that this will be divisible. The two prime factors. Think again, take your time. This is a beautiful question, beautiful arrangement of numbers. Everyone, take your time for 2-3 minutes. Let's start. May I? So 1 minute. Why so? No, difficult to say. So, no, this is the factors are not coming out, but like lot many numbers are given. Now, maybe possible key like the number is coming as a composite one. One factor is not multiple of that, but other factor of will be multiple of that number. See, may I start? Actually, we know that this 2 to the power 2 to the power n minus 1. Right. This we can write 2 to the power 2 to the power n minus 1 plus 1 and 2 to the power, right, plus 1 and 2 to the power 2 to the power n minus 1 minus 1. Is this okay? This is a square minus b square, right? But this again can be factor, and this can be factor as 2 to the power 2 to the power n minus 2 plus 1 and 2 to the power 2 to the power n minus 2 minus 1 and so on. Then again this will be factor, and this is going on till the number will be 2 plus 1 and 2 minus 1, right? So I can say this 2 to the power 2 to the power n minus 1 is nothing but this plus 1 plus 1
plus 1, and so on up to 2 plus 1 and 2 minus 1. 2 minus 1 is 1, right? 2 plus up to 2 plus 1. Is this okay? ये तो टेलीस्कोपिक है, right? This number, right? So now what we can say from this, right? This is the number, right? Going up to 2 plus 1, or just I'm writing 2 plus 1 and 2 minus 1 to 2 plus 1 up to this number. You are like were able to drag this out, right? Now 2 to the power 2 to the power n minus 1. Can I write this as 2 to the power 2 to the power n plus 1 minus 2? This will be is divisible by all the numbers coming here. Right, this will be, right, this number will be divisible by all the numbers that are the factor of this, right? So I'm assuming two numbers, right? If two numbers are there, right? And one is the n and other is the number m, right? 2 to the power 2 to the power m, right? Where m less than m, right? This is a common divisor, right? This minus 1 is a divisor, right? Common divisor, right? If this is a common divisor, so this must divide this as well as this, right? I'm saying it, right? Two number, I'm taking this plus 1 and 2 to the power 2 to the power m plus 1. These are the common divisors. If these are the common divisor and this is the number, so I can say this number must divide this as well as 2. But this is an odd number. So it's not possible to divide this number. Is this okay? Right? Because each and every number are odd. So 100% this will not divide any of the two. So all of the numbers are relatively prime or co-prime with each other. एक ऐसा पहले भी प्रूव किया था हमने. We have already done this. Right? We have taken a number like less than, I said, and that we have to prove that this number is not divisible. Everyone understanding this? Everyone understanding this, or may I have to like explain more on this? Satyus, okay? Yes, sir. Sir, actually, I tried something different. Sir, पहले I took 2 to the power x something, and I said that it is divisible by n, where n has to be an odd number. Then I got 2 to the power x as n minus 1 mod n. And then I multiplied it by 2. So I got 2 to the power x plus 1. And power 2 to the power x plus 1 I got. And then that will be n minus 2 mod n. Yeah, it will be, the remainder will be odd in that case. Okay. If we keep on multiplying 2, every time we get an odd remainder. So I get that any power other than any number other than 2 to the power x is not divisible by n. Yes, yes, doable. Very good. Very good. Aryan, okay. Yes, sir. Passive, okay. Yes, sir, we have discussed this before. Hmm. Generalization with A.
Okay, Utkarsh, Yes, sir. right? Okay, right? So that was the question I have given you, right? Oh, just one more question I'm giving you. Time. As I said, we have to discuss, right, the digits and like we have to go for the base of the numbers, right? If we have to take out the base, like some numbers are given and we have to write down as a like base we have to change, like 1726. We have to write down in a base 8. Or base 2 to all you know na, how to write down this in the base 2. Everyone? Aryan, Utkarsh? Yes, sir. So I'm giving you, you have to write down this as a base 8. The number 1726 is given on base 10. Now you have to convert this as a base 8. It's a simple, like, I hope you all know this. Sir, I'll send the answer. Very good. Very good, Kasif. Sanjana, very good. Pratyush, very good. So 1726, you have to divide this by 8, right? Right? So what you are getting? Sir, 3276. Very good. Remainder is 6. And then this number 2 and 5 and divided by 8. So you can write 1726 as 8 into 215 plus 6. It would be easier to see the pattern. And 2 and 3 by 8 is 5. And this is 3. So 3276. Something like this, na? Yes, sir. Yes, Kasif? What is it? Yes, sir. 3216. Okay. So if I have to change the number in certain form, right, we can do it in this way. So what I'm giving you, so all you know, right, everyone, right? Very good, everyone, very good. So the question is the number 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14 is written in the base 15, right? So we can just write A, B, C, D, right? Huh? We can just write A, B, C, D like in hexadecimals. You can 15. The numerical of, right? The number is equal to, in the base 10 is 14 plus 13 into 15 plus 12 into 15 square up to 15 to the power 13, something like this. Base, right? What is the question is now? Question is coming. This is okay now? This is okay now? Yes, sir. Right? Now, the question is, what is the remainder upon dividing this number by 7? बात होगी। By 14, this is a 0 then 3. Question is clear now, Sivan? Yes, sir. Okay. But use very good, Chris is very good. A very simple question, direct question is this, right? Only the fancy way to give it this, right? Yes, very good observation. Aryan, कितना बड़ा नंबर लिख दिया. And when you are सर dividing, मैंने रिमाइंडर से कर लिया था. अरे when you are dividing this, so remainder will be only 0 to 6 na. You have written 2, 2, 3, 4, 1, 5, 2, 5, 0, 1, 9, 4, 3, 1, 5, 9. What? You have written the number only. सर रिमाइंडर वाला यूज कर लिया मैंने. Only remainder you have to write now, not the number. Devang, try once again, beta. Good going. Sanna, yes, you can apply modulo congruency, but little bit. Only the logic you have to apply. Devang, very good. Now this is good. See, in this question, we know that 15, the base 15, when I'm dividing this by 7, we are getting remainder 1. So what I'm saying, with the complete number, I'm getting the remainder 1 plus 2 plus 3 up to 15 only. Right, not the number given. Right, 13. Right? And 1 to 13, the sum will be always divided by 7. So this is always divided by 7. So the remainder will be 0. Yes, Utkarsh, what you have applied? सर वही सेम कॉन्सेप्ट जो ना? आपने बताया सर बाद में देखा मैंने. Right? So the next is in the modulo and this.
Okay now, everyone? Factorial n, the factorial is divisible by factorial n to the power n minus 1 factorial. Factorial n is in the factorial is divisible by factorial n to the power n minus 1 factorial. This is challenging. This is challenging, right? But if you are able to think maximum 4-5 steps, you are getting the answer. Four minutes you have. Sir, done. Very good. Just give us 2 minute time. Everyone has to think. Okay, let's explain. Aryan? सर तो मैंने क्या किया कि पहले मैंने n फैक्टोरियल का फैक्टोरियल को वैसे किया कि इट इज ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 टू n फैक्टोरियल. सो हम लोग ऐसे हर रोज ले सकते हैं 1 into 2 into 3 into 4 till n. n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 जाएगा 2n तक. फिर 2n plus 1 जाएगा 3n तक. सारे जितने रोज है n फैक्टोरियल तक वो n फैक्टोरियल सॉरी n minus 1 n फैक्टोरियल का फैक्टोरियल तक है. वो सारे n फैक्टोरियल से डिविजिबल है जितने n minus 1 फैक्टोरियल रोज है. Then? सर फिर उसके बाद हम लोग फिर हो सकता है तो यस क्योंकि 1 into 2 into 3 into 4 into n तो n फैक्टोरियल से ऑलरेडी डिविजिबल है. फिर n plus 1 into n plus 2 into n plus 3 into n plus 4 जाएगा पूरा 2n तक वो भी n फैक्टोरियल से डिविजिबल है. फिर नहीं, वैसे कर और थोड़ा सोचना पड़ेगा. नहीं, नॉट गोइंग. बहुत सारे लेकिन आएंगे क्योंकि वो पावर में कहाँ से मेरे को लगेगा. सर हम लोग के पास n minus 1 फैक्टोरियल रोज है राइट. हम्म. तो इसमें हम लोग अगर n फैक्टोरियल से डिविजिबल होगा सारे n minus 1 फैक्टोरियल रोज दैट मीन्स द होल when it is multiplied with whole when it is multiplied to form n factorial का factorial then It is not given ना n square का factorial. It is given n factorial का factorial. yes sir that only I'm saying n factorial का factorial जितने n minus 1 factorial के रोज है वो सब
n factorial से divisible होंगे. Send the solution. Yes sir, 1 minute. So 1 minute. कोशिश करो पीएनसी का क्वेश्चन फ्रेम करने का. यू हैव टू फ्रेम अ क्वेश्चन दैट इज ऑफ पीएनसी. You can frame a question of PNC. We write, this is the question, right? I have framed a question of PNC and that will work for this. Okay, सर मैंने वर्किंग भेज दिया. where beta? सर आप व्हाट्सएप में. Asha, just a minute. कोशिश करो ग्रुप साइज बताया था मैंने उस पर अटेम्प्ट करने का. वो अधिक अच्छा इफेक्टिव काम करेगा आपके लिए. ग्रुप्स करके रो अरेंजमेंट में भी काम कर सकता है बट गुड. वर्किंग तो ठीक लग रही है. गुड आर्यन, वेरी गुड. डन.
what I'm saying ना कि n factorial, right? n factorial balls we have, right? And we have to plan to distribute this into n-1 factorial groups. ये मैं चाह रहा था, right? And each having size n, right? Each having size n. So this is n times of n-1 factorial. That will be n factorial. So it's coming as factorial n the factorial upon factorial n to the power n-1 the factorial into n-1 the factorial with factorial. I guess यही कुछ चाहिए था आपको. याद आया ग्रुप का? बिना ऑर्डर के ग्रुप ऐसे ही बनते थे ना, इक्वल साइज ग्रुप. जितने बने उसी से मैंने डिवाइड भी कर दिया. बट आर्यन के भी ठीक थे. आर्यन के सॉल्यूशन वाज गुड. आप इस पे शेयर कर सकते हो बेटा? ठीक है. देन विल फिर मैं ये करता हूँ, फिर हम लोग मिलते हैं. ठीक है. ओके. थैंक यू एवरीवन.